Assalamu alaikum everyone. How are you? So, in our current affairs series, our today's topic is about Pakistan's US relation regarding Trump era. कि ट्रम्प के एरा के अंदर पाकिस्तान और यूएस के कैसे रिलेशनशिप्स रहे हैं। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए तो उसे किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं और क्या जो है वो सही तरीका कार है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। सो आवर क्वेश्चन इज डिस्कस पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप्स ड्यूरिंग द ट्रम्प एरा। एनालाइज द अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान इन दिस पीरियड कि इस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली हमें यूएस के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े पाकिस्तान को यूएस के साथ अपना जो है रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान यूएस relationships remark a roller coaster ride, shifting from periods of strategic cooperation to mistrust and ambiguity। मलिहा लोधी ने ये कहा। सो पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप्स कोशिश करनी चाहिए अगर हम उससे रिगार्डिंग जो है कोई कोटेशन कोई किसी की जो है इस तरह सेंग हो तो सबसे पहले उसे राइट अप करें। सो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालती है एग्जामिनर पे। पाकिस्तान यूएस relations observed a thaw in relations which were strengthened amongst Biden administration. These advancement are this administration is the outcome of proactive diplomacy. सो ट्रम्प के एरा के अंदर प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी थी एंड रिवाइवल ऑफ रिलेशन थ्रू काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन। ये पीछे भी हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म में क्या डिफरेंस है। टेररिज्म बेसिकली क्या है, दहशतगर्दी है जो भी हो रही है, और काउंटर टेररिज्म होता है कि उस टेररिज्म को रोकने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो क्या क्या स्टेप्स हमने लिए उसको रोकने के लिए। काउंटर टेररिज्म का मतलब कि काउंटर करना टेररिज्म को। सो बहुत ज़्यादा कोऑपरेशंस बनी इस टाइम पीरियड के अंदर। ट्रम्प एरा एम्बार्क्स द जर्नी फ्रॉम क्लाइंटलिस्टिक एंड ट्रांजेक्शनल relations to strategic diversification and cooperation on equal footing. This presents multifaceted opportunities like rare earth mineral deal, crypto and IT sector agreements, and role in peacemaking which can lead to economic revival and enhance global structure. येट दिस रिप्रोचमेंट आल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले ये अभी हम इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता रहे हैं जो आगे जाके हम डिटेल से लिखेंगे। ठीक है, हमने बताई कि अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी मिली अभी हमने देखी, आर्ट्स मिनरल डील, क्रिप्टो और आईटी सेक्टर के एग्रीमेंट्स और पीस मेकिंग के। ठीक है, फिर हमें उसके साथ साथ चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़े, एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिंग, और सेकेंडली क्या है, बैलेंसिंग द ग्लोबल पार्ट्स विच रिक्वायर प्रेगमेटिक फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। क्यों, अब आपको पता है कि यूएस तो पहले से ही सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन अब चाइना भी जो है इसके मुकाबले पे आ गया और उससे जो है वो टक्कर का मुकाबला दे रहा है। अब चूंकि इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा क्या है, दुश्मनी है चाइना और यूएस की, एक दूसरे के हरीफ ममालिक हैं, तो चूंकि चाइना पाकिस्तान के साथ है और यूएस जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। सो इस लिहाज के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करता है पाकिस्तान यूएस और चाइना के रिलेशनशिप को अप बिल्ड करने के लिए या फिर बैलेंस को कीप कर रखने के लिए। ठीक है, पीस को, विच रिक्वायर प्रेगमेटिक फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। सेकेंड हेडिंग क्या होगी हमारी, इससे को आपने और ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन करके लिखना है। इट्स आउटलाइंस एंड इट विल प्रोवाइड यू गिव द रोड मैप to attempt the question. A brief overview of Pakistan-US relations since 1947. 1947 इंसेप्शन क्या थी, रिकग्नाइजेशन एंड यूएन मेंबरशिप जो है उन्होंने किया। फिर सीटो और सेंटो के अंदर कब हुआ, 1954 1955 कोल्ड वार एरा जब चल रहा था। फिर 1965 और 1971 के अंदर क्या हुआ, जब इंडो पाक जो है वो जंगें चल रही थी, सैंक्शंस और पाकिस्तान वॉर ओवर। फिर अपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम जब हुआ 1971 में। 1979 पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, भुट्टो एरा, ये सारा डिटेल से आप लिखेंगे। 1979 टू 1989 यूएसएसआर कंटेनमेंट हुई, अफगान जिहाद पार्टनरशिप, देन सैंक्शंस प्रेस्टर अमेंडमेंट 1989 to 2001 sanction our nuclear ambition. After that, in 2001 to 2021, forced and transactional partnerships on war on terror partnership. Then revitalization of ties, Trump era in 2021 to 2025, warming of ties, Trump era. Third, इस point क्या होगा इसके outline का, a bird's eye view of Pakistan relations in Trump era relations beyond transactional approach. Pakistan and US relations underwent warming under Trump administration after Pakistan cooperated in counterterrorism in Afghanistan. Our apprehension of Al-Qaeda leader aiding peaceful US withdrawal in 2021 remains another significant event leading to improved ties.
Fourthly, opportunities presented before Pakistan in contemporary Trump administration as opportunities enhanced global stand, cooperation in peacemaking, regional and global stability, environmental diplomacy, counter-terrorism partnership over Afghan stability and इकोनॉमिक राइवलरीज मिनरल एंड क्रिप्टो डील। इन सबको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। तो इनको भी आपने जो है वो अलग से पॉइंट्स बना के लिखने हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली ट्रम्प फेरा के अंदर। इकोनॉमिक रिवाइवल इन्वेस्टमेंट थ्रू मिनरल एंड क्रिप्टो डील्स के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान कैन एनहांस एंड सपोर्ट इकोनॉमिक रिवाइवल थ्रू कॉपरेशन बियॉन्ड सिक्योरिटी। These prime instances are minerals deal or rare earth minerals, lithium, copper, gold, and platinum. Wreckage like in Balochistan is central to mineral extraction. Then cryptocurrency deal क्या हुई? Pakistan is stepping into blockchain technology. So through this deal, Pakistan is aiming to establish crypto mining units. अभी आप देख सकते हैं कि यूएसए कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है। और इनके दरमियान कौन सी डील हुई? पाकिस्तान यूएस मिनरल डील हुई। कहाँ पे? रिकोडी के अंदर, जो कि कहाँ है? बलूचिस्तान के अंदर। ये फिगर शो कर रही है मैप रिप्रेजेंटिंग मिनरल कोऑपरेशन बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान। अगर आप पेपर के अंदर इस तरह के मैप्स वगैरह बनाते हैं, कोई फ्लो शीट डायग्राम बनाते हैं, इस तरह के बनाते हैं, तो इससे जो है वो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और देखने वाले के ऊपर भी वो अच्छा इम्पैक्ट डालता है कि स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरह समझता है। उसने फैक्ट एंड फिगर्स भी इसके अंदर लिखे हैं और साथ में जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दी है उसकी, ठीक है। सो कोशिश करें जितने ज़्यादा मैक्सिमम आप उसके पॉइंट्स बना सकें, मैक्सिमम आप जो है वो डायग्राम्स बना सकें, उसकी बना सकें जो कुछ भी, तो उसको लाजमी लिखा करें। देन enhanced global standing cooperation in Palestine peace process. Pakistan remained a key player in Palestine peace breaking by Trump and Sharm el-Sheikh, Egypt. Pakistan is also invited by US in ISF, but is ISF International Stabilization Force. But Pakistan has shown reluctance. Then Pakistan's leading role in peacekeeping mission. Pakistan, with cooperation of US and UN, has worked for peacekeeping across globally. पीस कीपिंग मिशंस क्या क्या थे? कोंगो के अंदर जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान, फिर सोमालिया में और पैलेस्टीन के अंदर जो है सपोर्ट करता है और यूएस भी जो है वो उसको मानता है। देन काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन टू क्रैब रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म अफगान पीस प्रोसेस। आफ्टर यूएस विदड्रॉल, टीटीपी रिसर्च विद patronage and sanctuaries in Afghanistan Taliban regime. Pakistan and US cooperate in intelligence sharing and work for dramatic revival in Afghanistan. अब आप देखें कि यूएसए कहाँ पे है और पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान कहाँ पे है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान के साथ क्या है, आपको पता है कि पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान लगता है, तो वहाँ पे टीटीपी इंसर्जेंस है और इनके दरमियान क्या कोलैबोरेशन है ओवर अफ़गान पीस को लेके। तो पाकिस्तान जो है इसके अंदर अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और इसके साथ साथ यूएसए भी अपना बहुत ज़्यादा रोल इसके अंदर प्ले करता है। So this diagram shows or illustrates resurgence of TTP and Pakistan and US efforts offer Afghan peace. Then regional and global stability, brokering of peace between India and Pakistan. Two neighboring nuclear states, India and Pakistan, if go to confrontation, may inflict catastrophic results for the peace of the region and the world. US used convict and trade diplomacy with India to end the war 2025. Environmental diplomacy and hedging us for US for resistance building funds. US provided aid of accord $300 million to revive the country past 2022 devastating floods according to IPRI 2023 report. So hedging funds for climate justice is for loss and remote fund, green climate and aid for carbon credits. तो इन दोनों ने जो है वो मिलके काम किया इन सब चीज़ों को लेके। देन चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान इन ट्रम्प फेरा, ब्रीफ एनालिसिस। अगर हम इसका देखें, चैलेंजेस फेसिंग पाकिस्तान इन ट्रम्प फेरा क्या है? पहला क्या? एक्सटर्नल ओवर रीच अंडरमाइनिंग इंटरनल ग्रोथ। सेकेंड इज क्राइसिस ऑफ बैलेंसिंग रिलेशन विथ यूएस एंड चाइना रशिया। देन ट्रांजेक्शनल एंड शॉर्ट टर्म रिलेशंस डाउन प्लेइंग सस्टेनेबल। फोर्थली ट्रम्प्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड यूएस विद इंडिया। External overreach undermining internal domestic growth and sovereignty is, although relations with US have improved, but there seems to be a lack of political will to curb governance challenges. Pakistan currently grapples with following issues.
ओके, व्हाट आर दीज? फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी चैलेंजेस हो रहे हैं, रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में जो है वो आए दिन दहशतगर्दी का कोई ना कोई वाक़या देखने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर एक्स फाटा इन बलूचिस्तान, वो चाहते हैं कि हमारा जो है अलग से बना दिया जाए, ठीक है। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन क्राइसिस हैं, इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज़, फ्लड्स 2022 एंड 2025। Then challenges of balancing relations, Western Bloc, US, Russia, China, and other countries. Pakistan aimed to keep cordial relations with all relations. Article 40 of Constitution of 1973 states that Pakistan shall endeavour to keep friendly relations and work for Asia, Africa, solidarity, and world peace. Then transactional nature of relations, historical precedents hinting at challenging of sustaining long-term relations. Historical relations between Pakistan and US have been of transactional nature as described by Maliha Lodi in her book Pakistan Beyond the Crisis State. What is historical precedents? These are Cold War era Sito Santo 1971 Pak role in China-US relationship building, 1979 to 1989 Afghan jihad with USSR, and 2001 to 2021 with decades of war on terror. This is the growing news between US and India. Trump's unpredictable. Then Donald Trump and his policies are highly unpredictable. Moreover, US and India new nexus to counter China in the Indo-Pacific strategy presents new challenges for Pakistan. देन टग ऑफ वार पाकिस्तान एट क्रॉस रोड्स, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी स्ट्रेटजिकल जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ठीक है। पाक चाइना को लेके, इंडो और यूएस को लेके, ठीक है। देन ब्रिक्स जो है, सी पैक, एस सी ओ, ब्रिक्स, डीओ डॉलराइजेशन, ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ क्वाड, एक्यूएस, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, BGW और PG2 सारी के जो है जो इसका सेंट्रल पॉइंट है। At the last, we will write its conclusion. Pakistan-US relationships has become cordial under Trump administration. It presents opportunities such as economic revival through bilateral contracts and greater global standing. Yet it also presents multiple challenges like balancing of ties, sovereignty issues, and unpredictability of relations. Hence, it is required to make balanced foreign policy framework and international or internal capacity to face these challenges. So till that, we have completed our today's topic. If you have any query, any question, any mistake find in my today's lecture, you can ask in comment section or highlight in comment section. See you in the next video with next topic. You can also tell me that what should be the next topic regarding current affairs. Okay, see you soon. Take care. Allah Hafiz.